Superposition of wave. There are three different cases of superposition. First, interference, second, standing wave, and third, beats. Interference and standing wave formation, these two cases you have already done. Now we will deal with third case of superposition, that is beats formation. First, what is superposition? This is a phenomena in which two or more waves traveling independently and simultaneously, not knowing that other wave is also coming, they reach at a point in the space at the same time. Then they cause modification in the redistribution of energy, resulting in the formation of either interference or standing wave or beats. Okay, so today we have to deal with beats formation. So what are the requirements for beat formation? It is a case of superposition, number one, and you will make use of principle of superposition to deal with the beats. What is that principle of superposition? When two or more waves, they reach at a point in the space at the same time, the new wave is formed. And the displacement of the new wave is the vector sum of the displacement of superimposing wave. Okay? So here the requirement was the two waves which are going to superimpose, which are going to reach at a point in the space at the same time, should be identical. Identical means should have same frequency, same wavelength, they should travel in the same direction, and then they reach at the same point at the same time, resulting in the formation of constructive and destructive superposition, formation of bright and dark in case of light. And in case of standing wave, again you require two identical waves having same amplitude, same frequency, same wavelength, but traveling from opposite direction. They reach at a point in the space at the same time, causing modification in the redistribution of energy, resulting in the form of node and antinode. Node was the point where pressure was maximum, displacement was zero, and particle was not free to oscillate. Then antinode, point where pressure is minimum, displacement is maximum, and particle is free to oscillate. Nodes and antinodes, they are formed alternatively. No two nodes come together, they are separated by antinode. Similar to antinode, they are separated by node. Node and antinode separated by lambda by 4. Two consecutive node separated by lambda by 2. Okay, these two cases you have already done in detail. Now we have to deal with beats. It is a case of superposition. Now for beat formation, what are the requirements? You need two waves, and those two waves should not have the same frequency. Waves should have slight difference in their frequencies. Waves are progressing. They are going in the same direction. They will reach at the same point at the same time. This is what happens in case of superposition. But these waves should have a slight difference in their frequency. For example, if you take waves given by y1 is equal to a sine 2 pi n1t, second wave given by a sine 2 pi n2t, where y is equal to a sine omega t. Here omega is 2 pi n. And you have two waves given by equation number 1, equation number 2. If you look at these two waves, they have same amplitude. Okay, they are progressive waves. They are traveling in the same direction. They will reach at the same point, at the same time, but they have slightly different frequencies. Now I am using the word slight. What do you mean by the slight? Slight means they should have different frequencies, but this difference should not be more than 10. The difference in the frequencies of these two waves should be less than or equal to 10. Why? Why this restriction is put? If difference is more than 10, beats will be formed.
but will not be detectable. Okay. In case of sound wave, the agency which will detect the formation of beats is ear, human ear. In case of light, observer will be human eyes. Okay? तो लाइट अगर एक जगह पहुंचती है तो फिर वो पॉइंट नॉर्मल से ब्राइट बनता है या डार्क बनता है, आंखों ने देखना है. और बीट इज सडन राइज और फॉल in the intensity of sound. That means we'll talk about beat formation in the case of sound waves only. Sound waves are mechanical waves. Sound waves travel in the form of compression and rarefaction. Sound wave can travel through solid, liquid, gases. The speed of sound wave, speed of longitudinal wave is dependent upon elasticity of the medium and the density of the medium. Okay, so what is this beat? Beat is rise or fall in the intensity of sound. What is the cause? Cause is superposition. But there are three cases of superposition. This superposition, which is a special case of superposition in which the progressive wave have different frequencies. In this case, they were having same frequency. Here also they had the same frequencies. Here same direction, here opposite direction. Here same direction, but frequency is different. Difference should be less than or equal to 10. Result is beat. Means when such waves traveling independently and simultaneously reach at a point in the space at the same time, resulting in the modification in the distribution of energy, and the final result of this redistribution of energy will be sudden rise or fall in the intensity of sound. आवाज एकदम बढ़ जाएगी या एकदम घट जाएगी, नॉर्मल नहीं रहेगी. नॉर्मली हम जैसे बोल रहे हैं, I'm a speaker, you are the listener, and you are receiving sound energy through the medium air, and you are receiving sound energy in the form of compression and rarefaction. Compression, rarefaction. Okay? So here also compression, rarefactions are formed between the speaker and the listener. Okay? And this rise or fall in the intensity of sound is beat. That means you will observe beats only in case of sound wave. Rise or fall. Definition: rise or fall in the intensity of sound due to superposition of waves which are traveling simultaneously and independently, having slight difference in their frequency. The slight word means frequency should not be more than 10. Frequency difference should be either equal to 10 or less than 10. Okay? Then there will be sudden increase in the intensity of sound or sudden fall in the intensity of sound. The rise or fall in the intensity of sound is beat. आवाज का एकदम बढ़ना, आवाज का एकदम घटना, तो बीट बन गई. ओके? और बीट को डिटेक्ट कौन करेगा? ह्यूमन ईयर. एंड ह्यूमन ईयर हैज वन प्रॉपर्टी, persistence of hearing. Human ear can detect the rise or fall in the intensity of sound if it is taking place 10 times or less than 10 times per second. Okay? And how many times intensity of sound will rise or fall in 1 second? That is called beat frequency. Beat frequency, which is denoted by small m, we will prove this is equal to difference in the frequencies of superimposing waves. How many times intensity of sound rise or fall? That is beat frequency per second. Okay? And beat frequency, which will come out to be difference in their frequencies. If difference is, let us suppose the difference between these two waves, difference in the frequencies between these two waves is 4, then in 1 second 4 times the intensity of sound will rise and 4 times it will fall in 1 second.
Okay? Now what happens is frequency difference is more than 10. Human ear will fail to detect. Intensity rise हुई है या fall हुई है, human ear detect नहीं कर पाएगा. तो जिस ऑब्जर्वेशन को हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे तो वो हो रहा है, हमें क्या पता हो रहा है कि नहीं हो रहा है. तो इसलिए रिस्ट्रिक्शन लगा दी, कीपिंग इन व्यू द प्रॉपर्टी ऑफ ह्यूमन ईयर, दैट इज परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग. Human ear can detect rise or fall in the intensity of sound if it is taking place 10 times per second or less than 10 times per second. Okay? And if the difference is more than 10, the more than 10 beats will be formed, means in 1 second, more than 10 times, intensity of sound will rise or fall, and human ear will fail to detect. So this is the restriction. So whatever is the difference between the frequencies of superimposing wave, that is beat frequency. It will mean if this difference is 4, in 1 second 4 times intensity of sound will rise, 4 times it will fall in 1 second. This will prove. So such waves they are going to superimpose. Result will be beat formation. Beat formation is rise or fall in the intensity of sound. Restriction over this is this. Okay. And in 1 second, how many times it will rise or fall, that is beat frequency. That is equal to difference in the frequencies of the superimposing wave. Okay. So when such waves traveling simultaneously and independently, not knowing this, doesn't know that this is also coming, and both they reach at a point in the space at the same time. Then according to principle of superposition, when such wave superimpose, new wave is formed, and the displacement of the new wave is equal to the vector sum of the displacement of superimposing wave. This is according to the principle of superposition. The rise or fall in the intensity will be according to law of conservation of energy. A wave is energy. Two energies are reaching at the same point at the same time. Then energy will either rise or it will fall. But whatever is happening is according to law of conservation of energy. When intensity will fall, where that energy has gone, energy will disappear from that point and will appear at that point where intensity rises. यहाँ से जो एनर्जी कम हुई वो वहाँ जाके अपीयर होगी, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हैज टू बी सेटिस्फाइड. So this is according to the principle of superposition. So let us find out the vector sum of these two waves. So y will be equal to, you can take a common, they have same amplitude. So you will have sine of 2 pi n1t plus sine of 2 pi n2t. Then make use of CD formula, trigonometrical formula, sin C plus sin D is equal to 2 sin C plus D over 2 cos C minus D over 2. When you make use of the CD formula, then you have sine of 2, then sine, this is C, this is D, C plus D over 2, C plus D over 2, this is C, sine D, 2 sine C plus D, that means 2 pi common, then n1 plus n2 into t, C plus D, and then you have to divide it by 2 also. Cos C minus D over 2. Here 2 will get cancelled. So you will have I is equal to 2a cos pi n1 minus n2 into t. Then sine 2 pi n1 plus n2 over 2 into t.
this is the new wave, the resultant wave formed by the superposition of such waves. सर उसका 2 2 का नहीं कटा. बताओ ना. It's a good question. यहाँ आपने 2 से 2 cancel किए. Why here you have not cancelled 2 into 2? The reason behind it. This is the amplitude of the new wave. Okay. Yes sir. The interfering, superimposing waves were given by question number 1 and 2. This is the new wave. Just compare. You found in case of interference, the resultant wave have the same frequency as that of interfering waves. Similarly, in the case of standing wave formation, again you found the frequency of the resultant wave was same as that of the superimposing wave. But here, this is the frequency of new wave, sine 2 pi n t. This is A, compare it with this equation, y is equal to A sine omega t, or y is equal to A sine 2 pi n t. N is the frequency, omega is angular frequency. Okay, so sine 2 pi n t, this is n, this is t. That means frequency of the resultant wave is Average. the average, mean of the frequencies of the superimposing wave. You have to compare the resultant wave with the individual waves. Whether frequency remains same or different, amplitude same or different. What is new in the new wave? What is new in the resultant wave? Okay? Look, according to the principle of superposition, when two waves superimpose, the new wave is found. The new wave has displacement equal to vector sum of the displacement of superimposing wave. So we have got this as the resultant wave. We want to compare what has happened, what are the new changes in the resultant wave. Amplitude is given by this. Where is the amplitude of the superimposing wave? A. No amplitude is this. It is different. Frequency of superimposing waves were n1 and 2, and the new wave has frequency, comparing this with this, n1 plus n2 over 2. That means this is the arithmetic mean. In beat formation, which is a special case of superposition of waves, the new wave is formed and the frequency of the new wave is equal to the arithmetic mean of the frequencies of superimposing wave. Okay, this is first conclusion which you have got from resultant wave. Clear? Now the amplitude of the resultant wave is 2a cos pi n1 minus n2 into t. Then I told you the definition of beat. Beat is sudden rise or fall in the intensity of sound. Beat is formed by the superposition of such waves. When such waves superimpose new wave with frequency, arithmetic mean of the frequency of individual waves, amplitude is given by this. And intensity, intensity is proportional to, intensity is equal to 2 pi square n square a square rho into v. This is the intensity. The beat is rise or fall in the intensity of sound. Sudden increase in the intensity. Intensity is given by this, and it is related to the amplitude by this relation. Intensity is proportional to square of the amplitude. Okay?
So you have to see this intensity is time dependent. This amplitude is time dependent. So intensity will also depend upon time. That means at a particular point during superposition of such waves, intensity will keep on changing. लिसनर तो वही है, उसके कान में जब ऐसा सुपरविजन हुआ, बीट्स बनी, बीट में सडन राइज इन द इंटेंसिटी, आवाज एकदम बढ़ गई, नॉर्मल नहीं रही, जब एकदम आवाज बढ़ गई, ईयर ने डिटेक्ट किया, मतलब ये क्या हुआ, बोला बीट बन गई, सडन इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड और सडन फॉल, एकदम सुनना ही बंद हो गया। अरे कहाँ गई साउंड? स्पीकर तो बोल रहा है, दो स्पीकर बोल रहे हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, और जो लिसनर है वो एक ही है, तो वही लिसनर कह रहा है ये सिर क्या हो गया, आवाज एकदम बढ़ गई है, हमने कहा बीट बन गई है। ये कैसे बन गई है? हमने कहा सुपरविजन हुआ है। अरे पहले तो आपने इंटरफेरेंस कराया था, बीट्स वो स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन, वहां तो कोई सडन इंक्रीज सडन डिक्रीज नहीं होता था, नोड एंटी नोड की बात करते थे, मैक्सिमम मिनिमम की बात करते थे, ठीक है ना। यहाँ तो एकदम इंटेंसिटी बढ़ गई है, एकदम इंटेंसिटी फॉल कर गई है। इंटेंसिटी का बढ़ना घटना यही तो बीट फॉर्मेशन है। बीट इज द फिनोमिना ऑफ सडन rise or fall in the intensity of sound. But what is the cause of beat formation? Superposition. What type of waves are required for superposition to get beats? Waves with same amplitude. They In the same direction. they should travel in the same direction, but they should have slight difference in their frequency. And difference must be less than or equal to 10. Then you will find sudden increase or decrease, sudden rise or fall in the intensity of sound. But how many times it will happen in 1 second? That is beat frequency. And we will prove that this beat frequency is exactly equal to difference in the frequencies of the superimposing wave. So rise in the intensity is time dependent. क्योंकि intensity is proportional to amplitude square. Amplitude contains time. With the passage of time, same listener means same point of observation, and there is sudden increase or decrease. Listener एक ही है, point of observation एक ही है, और वही ये फील करा कि इंटेंसिटी एकदम बढ़ गई है या एकदम घट गई है, बीट्स बन गए। ओके, तो जब बीट्स बनेंगे, फिनोमेना का फायदा क्या हुआ और नुकसान क्या है? एक ऑडिटोरियम है, there are so many listeners sitting there, and on the stage there are many speakers, okay, many musical instruments generating sounds of different frequencies. There are chances for beat formation. Orchestra है, different musical instruments हैं, and different musicians हैं, different players हैं, and they are playing with their instrument, they are producing sound, and there are different frequencies. There is a chance for beat formation. And if frequency difference is less than 10, then listener will say क्या हो रहा है, एकदम आवाज बढ़ रही है, एकदम आवाज कम हो रही है। ये जो फिनोमेना होगा अच्छा नहीं लगेगा, तो फिर इन लिसनर्स को बेवकूफ बना दो। कैसे? कि जो डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी जो है, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से जो साउंड निकल रही है, फ्रीक्वेंसी डिफरेंस मोर देन 10 कर दो या फिर 0 कर दो। आपको पता है जब ऑर्केस्ट्रा वाले प्ले करते हैं डिफरेंट, तो पहले वो ट्राई करते हैं कि कहीं बीट्स तो नहीं बन रही, बीट्स बन रही होती है, फ्रीक्वेंसी डिफरेंस मोर देन 10 होता है, आपका ह्यूमन ईयर फ्लॉप हो जाता है, डिटेक्ट नहीं कर पाता, कहता ठीक है इनको बेवकूफ रहने दो, आप अपना काम करो, इनको कौन सा पता लगा। लेकिन अगर लेस देन 10 फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होगा, then observer will observe sudden rise or fall in the intensity of sound. It is not required. तो फिर क्या करते, मैचिंग करते हैं। Simultaneously, musician they play with their instruments, they generate sound. If there is a beat formation, if they feel beat formation हो रही है, तो फिर वो फिर मैच करते हैं फ्रीक्वेंसी
डिफरेंस को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं या डिफरेंस 10 से ज़्यादा कर देते हैं. So you can match the sounds generated by different sources, whether they are generating sound of the same frequency or different frequencies. You want beats? Yeah, you don't want. You don't want beats? Make the two instruments produce same that frequency sound of the same frequency, or they should generate two sounds with difference in frequency more than 10. Beats will be found but not felt, not observed, not detected by human ear due to persistence of ear. Persistence of human ear. Human ear fails to detect its rise or fall in the intensity of sound if it is taking place more than 10 times per second. Got my point? So let us say at what time intensity will rise. Okay, intensity proportional to A square. A is time dependent. With the passage of time, amplitude will change, intensity will change. Now you have to see at what time intensity will rise. Okay, for rise in intensity, amplitude, ठीक है ना, given by this, intensity proportional to this, 2A is a constant factor. So cos square pi n1 minus n2 into t for rise in intensity means for getting maximum intensity. Intensity is cost dependent. A square dependent means cos square, and cos is maximally 1. And square of cos is never negative. So if you want certain rise, you want maximum intensity, so this cos square must be equal to 1. Cos की maximum 1 होती है, square भी 1 होगा. Okay, तो intensity rise करेगी. So for this, then you take square root cos pi n1 minus n2 into t must be plus minus 1. Then solve this equation. What are the angles which have values? The cos of them have value either plus 1 or minus 1. What are those angles? So here plus 1 minus 1 you will get when you take the cos of k pi, where k may be 0, 1, 2, 3 and so on. Any whole number value, any natural. 0 and other natural numbers. You can just test it. If k is 0, so you have cos 0, cos 0 is plus 1. If k is 1, cos pi is minus 1. If k is 2, cos 2 pi is plus 1, cos 3 pi is minus 1, cos 4 pi is plus 1, cos 5 pi is minus 1, cos 6 pi is plus 1, cos 7 pi is minus 1. You have got the general solution for this equation. You can put any value of k, any whole number value. You will get cos of that angle either plus 1 or minus 1. So this includes for different values of k, this will have either plus 1 value or minus 1. And the square of plus 1 is 1, square of minus 1 is also 1. Because intensity is proportional to cos square. Okay, minus 1 has also its square plus 1. So therefore, for all these values of k, for all these values of cos of these angles, values either plus 1 or minus 1. Then you take cos inverse, cos का हटा दो. Pi n1 minus n2 into t must be a pi. Pi cancel. So what are the times at which there will be rise? There is no continuous rise. Rise and then fall, then again rise and fall, alternatively. Okay? With the passage of time,
intensity will keep on either rising or falling. So at these times, intensity will rise. So intensity will rise. Intensity will rise at t is equal to 0, 1 over n minus n2, 1 over 2 over n1 minus n2, 3 over n1 minus n2, and so on. Keep on putting the different values of k, starting from 0, then 1, 2, 3, and so we have found that what are the times at which intensity will rise. This is the equation which will give you for different value of k. Okay, for different time intensity will rise. There is no continuous rise or continuous fall. Alternatively, rise, fall, rise, fall, rise, fall. So these are the times when you will find intensity rises. When k is 0, t is 0. Starting में rise करेगी. Then at this time, in between there is a time gap, but at this time again intensity will rise. Then when k is 2, the 2 over this is the time when intensity will again rise. When k is 3, you can attach different values to k. For all these values of k, cos k is 1, intensity will be maximum. Okay? So for different values of k, find out different times when the intensity will rise. You know what is the time interval? Time interval. दो राइज के बीच में कितना टाइम गैप? टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव राइज. That is 1 over n1 minus n2. Time difference between two successive rise. अब राइज किया इंटेंसिव, फिर अब राइज किया, दो राइज के बीच में जो गैप है वो इन टाइम का डिफरेंस होगा ना. अब राइज किया, फिर इस टाइम पे फिर राइज किया, तो व्हाट इज द टाइम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव राइज? दिस माइनस दिस, यही आएगा. अब इंटेंसिटी राइज किया, फिर इंटेंसिटी अब फिर राइज किया, टाइम गैप यही आएगा. So this is the time interval. After every this time, there will be rise in the intensity. So how many times in 1 second intensity will rise? That is the reciprocal of time frequency आ गई ना. तो beat frequency m. What is this equal to? Number of times intensity will rise or fall per second. So this m will be, reciprocal of time period is frequency. A time gap आ गया between two successive rise. Okay. So after every this time, after every capital T time, you will find a rise in the intensity of sound. And then reciprocal of time period is frequency. That means the beat formation is periodic. After every this time, you will find the same thing. At t is equal to 0, it rises. At t is equal to 1 over n minus 1, n1 minus n2 again, intensity will rise. What the gap between two successive rise? This minus this, or this minus this, or this minus this. That is it. So this is time period. Beat formation is periodic. After every this time, rise. Okay? तो t टाइम में इतनी बार राइज, तो एक सेकंड में कितनी बार? तो 1 over t. एक सेकंड में कितनी बार आई? दैट इज बीट फ्रीक्वेंसी. तो रेसिप्रोकल इसका हो गया तो बीट फ्रीक्वेंसी आ गया. वी आर प्रूव्ड.
K, intensity of sound due to superposition. In case of beat formation, intensity will rise or fall per second. How many times? That is beat frequency. What is that equal to? Difference in the frequencies of the superimposing waves which have caused beat formation. This beat, phenomena of rise or fall in the intensity of sound. What is the cause? Due to superposition. What type of waves are required for this type of superposition? Two waves. Two in the same direction. Traveling simultaneously, independently in the same direction, but such waves should have slight difference in their frequency. If such waves superimpose means they reach at a point at the same point at the same time, then there will be modification in the redistribution energy, and here result will be beat formation. What is that beat formation? Rise or fall in the intensity of sound. Certain increase or decrease. But how many times this will happen in 1 second? That is beat frequency. What is that equal to? Difference in the frequencies. Clear? Now let us find out at what time intensity will fall. That is also a periodic phenomenon. So, for fall in intensity, this must be, because amplitude you have 2a cos pi n1 minus n2 into t. This is the amplitude. The resultant wave was 2a cos pi n1 minus n2 into t sine of 2 pi n1 plus n2 over 2 into t. This was the resultant wave. This was the amplitude of the resultant wave in beat formation. Intensity will either rise or falls. Okay. Now at what time? Because this amplitude is time dependent. With the passage of time, amplitude will keep on changing. And amplitude is related to intensity. Intensity 2 pi square n square a square rho v, which means intensity is proportional to amplitude whole square. And amplitude is continuously changing with the time. So intensity will keep on changing. Intensity will keep on changing with the time, and we want to see what time intensity will be either maximum or minimum. बीच वाला हम केस नहीं ले रहे. कब एकदम आवाज बढ़ गई, फिर नॉर्मल हो गई, फिर एकदम घट गई. यही बीट फॉर्मेशन है. तो क्योंकि एम्पलीट्यूड इज टाइम डिपेंडेंट एंड इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्केल एंड द स्केल, एंड दिस इज एम्पलीट्यूड स्केल ऑफ दिस. Minimum value of the scale is 0. Scale is never negative. Okay? Even if you take some negative number, उसका scale लगे तो भी प्लस आएगा. तो minimum value of a scale is 0. So we want के at what time intensity will fall. Intensity will fall when amplitude is minimum. Amplitude will be minimum when intensity is minimum. And intensity is proportional to amplitude whole scale. इसका वो जो स्केल है 2a तो कांस्टेंट ही है, उसका टाइम से कोई लेना देना नहीं. ये इज द एम्पलीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल वेव. ओके, वेरिएबल पार्ट ये है जो टाइम डिपेंडेंट है. तो कॉस स्केल का मैक्सिमम वैल्यू 0 है. देन स्केल रूट ले लो. कॉस पाई n1 माइनस n2 into t मस्ट बी 0, और कॉस पाई n1 minus n2 into t must be, find out angles for which the cos is always 0. Pi by k pi by 2. No, it is 2k plus 1 pi by 2.
You can check by giving different values to k. K is whole number. Let us check. Giving minimum value of k, 0. When k is 0, cos pi by 2, it is 0, cos 90 is 0. Then you put k is equal to 1. When you have k is equal to 1, so it will be cos of 3 pi by 2. Cos of 270 degree, that is also 0. That is also 0. And if you take k is equal to 2, cos pi by 2 is also 0. It is periodic function, cos is periodic, period is 2 pi. Okay? So giving different values, these values of k to this term, you will find all these values cos is 0. Clear? Now take cos inverse. Pi n1 minus n2 into t must be 2k plus 1 pi by 2. Then find out the times at which so intensity will be minimum at times t is equal to 1 over 2 n1 minus n2. This you get when you put k is equal to 0. Now next number, k is 1. So you have 3 over 2 n1 minus n2. Then put k is equal to 2, it will be 5 over 2 n1 minus n2 and so on. Here you find numerator same, denominator same, numerator odd numbers, 1, 3, 5, and next you will get 7 by, okay, by putting k is equal to 3. So you will get here 7 by 2 into n minus n2. So what is the time interval? Time interval between two falls. At this time intensity will fall, then at this time intensity will fall. 2 by 2 and 1. What is the time gap between two successive falls? It is the difference of this and this. तो माइनस कर क्या आएगा? दिस माइनस दिस 1 by n1 1 over n1 minus n. And what is the beat frequency then? same n1 minus n2. रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होता है ना, n1 minus n2. So you have proved that whatever is the difference between the frequencies of the two superimposing waves, same number of time intensity of sound will fall in 1 second, and same number of time intensity will fall or will rise per second. जितनी बार fall करेगी 1 सेकंड में उतनी बार rise करेगी, alternate rise or fall. Sudden increase, sudden decrease in the intensity of sound, that is beat. Okay, so what is the application? The phenomena is superposition, special case of superposition. Okay, where superimposing waves, they are going in the same direction, they reach at the same point at the same time, but they have slight difference in the frequency. Slight word, थोड़ा सा difference in frequency, but what थोड़ा सा, what slight? Less than 10. Why? Due to property of human ear. Human ear will fail to detect its rise or fall in the intensity of sound if it is taking place more than 10 times
per second. Bits will be found even if the difference is more than 10, but human ear will fail to detect. उसको पता नहीं लगेगा. Okay? हाँ, तो application. If you have two musical instruments, they are generating sound of different frequencies. You can match them. You can make them produce sound of same frequency. If you are unable to find rise or fall, that means either the instruments are generating sound of the same frequency or its frequency difference is more than 10. तो मैचिंग करनी हो, फ्रीक्वेंसी डिफरेंस को रिमूव करना हो, तो इस बिट्स का हम एप्लीकेशन ले सकते हैं. अब दूसरा एप्लीकेशन क्या होगा? हमारे पास एक कोई म्यूजिकल साउंडिंग बॉडी है जिसकी फ्रीक्वेंसी हमें पता नहीं है, तो वी कैन फाइंड आउट अननोन फ्रीक्वेंसी. फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव टू ट्यूनिंग फोर्क्स, yesterday I showed you the tuning fork, two tuning forks, okay? This A, this is B. Both are sounded together. दोनों को एक ही टाइम पर रबर पैड पे स्ट्राइक करना है, so that they start producing sound at the same time. Okay, and the sound will be separate in another direction. They may cause beat formation if they have slight difference in their frequency. Okay, let us suppose when they are sounded together, the beats observed are 4. M is 4 means 4 beats per second are observed when tuning fork A and B are sounded together, and the frequency of one of them is known. This is a tuning fork of known frequency. Its frequency is, let us suppose, 256 Hz. But frequency of the tuning fork B is not known, it is unknown. Okay? Frequency of this is N1, it is known. Frequency of this tuning fork is N2, but it is not known. Both are sounded together. And we observed 4 beats per second. What do you mean by this? The frequency of this either will be 4 more than this or 4 less than this. The frequency of this must be frequency of this plus minus the difference, which is beat frequency. That means N2, we suppose it is N1 plus minus beats. Now there are two possibilities, either 260 or 252. Now the question is, one tuning fork cannot have two frequencies. One tuning fork cannot have two frequencies. In this case, two tuning fork A and B sounded together, 4 beats are observed per second. Frequency this is 256. Then the frequency of this should be either 4 more or 4 less. If it is 260 again, when these two will be sounded together, difference is 4 bits will be observed. And if you take the frequency of this as 250 Hz, and then it is sounded with this, again difference is 4, the 4 bits will be observed. Now the question is, what is the exact frequency N2? It is this or this. B cannot have two frequencies. It will have either 260 or 252. Now how to find the correct out of these two? We will make use of the phenomena of beats. क्या करेंगे? So there are two possibilities. यहाँ ये अगर 260 हर्ट्ज इसको मानते हैं या 252 मानते हैं, दोनों में से कौन सी करेक्ट है ये देखनी है B की फ्रीक्वेंसी. क्या करेंगे? The tuning fork of unknown frequency is either loaded with wax or is filing. Either loaded or filing. Loaded means इसके हम prong पे wax लगा देंगे.
ताकि प्रोंग भारी हो जाए, और फिर इसको और इसको will be made to produce sounds by sounding them at the same time. अब क्योंकि ये लोड हो चुकी है तो आफ्टर लोडिंग ट्यूनिंग फॉर बी, अगर इसको लोड किया है तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी ना। हाउ मच लोडिंग हैज बीन डन, कितना वैक्स लगाया। अब ज़्यादा लगाएंगे तो प्रोंग ज़्यादा भारी हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी अब ज़्यादा कम हो जाएगी। थोड़ा सा लोडिंग करेंगे, थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा। गट माय पॉइंट। तो हमने अभी यहाँ ये देखना है, आपने इसकी लोडिंग कर दी है, लोडिंग से हम पता नहीं कितनी लोडिंग किया, हमें नहीं पता। मान लो लोडिंग करनी, आफ्टर लोडिंग इसकी फ्रीक्वेंसी या तो इतनी हो जाएगी या इतनी हो जाएगी या इतनी हो जाएगी या इतनी हो जाएगी, पता नहीं कितनी लोडिंग की, कितना वैक्स लगाया, ज़्यादा लगाया कम लगाया। और अगर ये सही मान के चलते हैं, लोडिंग के बाद ये 251 हो सकती है, 250 हो सकती है, 249 हो सकती है, 248 हो सकती है। इतना ज़्यादा लोड नहीं करना कि बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस, 10 से ज़्यादा तो डिफरेंस वैसे भी नहीं आना चाहिए, फिर बीट्स बनेगी तो पता नहीं लगेगा। तो लोडिंग मीन्स आपने वन ऑफ द टू प्रोग्राम्स ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी बी को हमने लोड कर दिया है विद वैक्स, इसको हैवी कर दिया, हैवियर देन द अर्लियर। देन अगेन ए एंड बी विल बी साउंडेड टुगेदर, अगेन बीट्स विल बी अब्सॉर्ब्ड आफ्टर लोडिंग। ये तो बिफोर था ना, बिफोर लोडिंग इतनी बीट्स थी। लेट अस सपोज आफ्टर लोडिंग नो बीट्स डिक्रीज हो गई। Let us suppose when after loading this and these are rounded together, instead of 4, 3 beats are observed, which will mean कि इसका और इसका डिफरेंस 3 का होना चाहिए। ओके, अगर इसकी लोडिंग की, ये सही है, लोडिंग किया है 259 हो गया, इसका डिफरेंस देखो 3 आ गया, लेकिन यहां लोडिंग से यहाँ डिफरेंस 4-5 हो गया। लोडिंग से ये हैवियर हो गए, फ्रीक्वेंसी डाउन हो गई, फिर दोनों को साउंड किया गया, फिर बीट्स ऑब्जर्व किए गए, बीट्स कम हो गई। मीन्स आफ्टर लोडिंग द ट्यूनिंग फोक ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ बीट्स लेट अस सपोज प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन के डिक्रीज हो गई, 4 से 3 हो गई। तो इफ बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस आफ्टर लोडिंग, तो देन इसमें यू हैव टू डिसाइड द साइन, +4 लिया जाए कि -3 -4 लिया जाए, क्योंकि 2 ऑप्शन है ना, कि इन दोनों में फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 4 होना चाहिए, डिफरेंस 4 होना चाहिए, 4 लेस के 4 मोर, ये नहीं ना पता, +4 और -4 ये नहीं ना पता, साइन डिसाइड करना। सर पर मतलब हमने 2 बार तो ये प्रूव करा था कि m = n1 - n2। हाँ वही होगा। तो सर ये प्लस माइनस कहाँ से आया? जब 4 बीट्स आ गई तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है इसकी और इसकी में कितना डिफरेंस होना चाहिए, 4 का डिफरेंस होना चाहिए कि नहीं? सर हम डायरेक्ट वन लिख सकते हैं, m = n1 - n2, उससे तो आ जाएगा। तो ये n1 - n2 ही तो 4 है सर। ये कह रहा है कि उसमें प्लस और माइनस दोनों हैं। n1 - n2 आप इधर ले आओ, प्लस माइनस का माइनस प्लस। अब यही तो चक्कर है कि +1 है, प्लस m है कि माइनस m है। मतलब हमें ये पता है कि 4 का डिफरेंस है, ये नहीं पता ज्यादा अच्छा। 4 ज्यादा के 4 यस सर, ठीक है, ये समझ आ गया। देयर इज ए चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 बीट्स मीन देयर इज ए डिफरेंस ऑफ 4। अब इसका तो पता है 256 है, अब इसका अगर 4 ज्यादा लेते हैं, 260 मान के चलते हैं, तो भी तो डिफरेंस 4 का ही आता है, और 250 मान के चले तो भी तो डिफरेंस 4 का ही आता है। अब एक ट्यूनिंग फोक जो है अननोन फ्रीक्वेंसी, इसकी 2 फ्रीक्वेंसी नहीं हो सकती। आपने 4 बीट्स ऑब्जर्व किए हैं, इसका मतलब इसकी और इसकी फ्रीक्वेंसी में 4 का डिफरेंस होना चाहिए। अब 4 का डिफरेंस होना चाहिए तो इसकी फ्रीक्वेंसी उससे 4 कम है कि 4 ज्यादा, ये नहीं ना पता कि यहाँ प्लस साइन लगाया जाए कि माइनस लगाया जाए। जो बीट्स 4 है, ओके, वो इसमें +4 करके इसका
फ्रीक्वेंसी आएगा कि -4 करके, +4 करें तो भी डिफरेंस 4 का है, -4 करके है तो भी डिफरेंस 4 का है। ये मान के चले तो भी फर्स्ट केस में बिफोर लोडिंग ये मान के चलते हैं तो 4 बिट्स विल बी ऑब्जर्व्ड। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी ये मान के चलते हैं तो अगेन व्हेन दे आर साउंडेड टुगेदर अगेन देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 4 एंड अगेन देयर विल बी 4 बिट्स। देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज है ना, Yes, sir. but out of these 2 possibilities only one possibility is correct. That will depend upon sign, प्लस m लगाया जाए, +4 किया जाए कि -4 किया जाए, which sign is to be taken. ओके तो हमने क्या देखा, जब लोडिंग कर दी, अगर हम इसको सही मान के चलते हैं, लोडिंग में इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम हो गई, Yes, sir. इसकी तो वही है, इसको कुछ नहीं करना, इसका और इसका डिफरेंस कितना हो गया, 3 का लोडिंग के बाद, और यहाँ भी 3 का हुआ है, मैच कर गया ना। लेकिन अगर ये सही मान के चलते लोडिंग करते तो इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम 251 और अब डिफरेंस आता 5 का, तो बीट्स बढ़नी चाहिए। अगर इसको करेक्ट मान के चलते हैं तो बीट्स लोडिंग के बाद बढ़नी चाहिए, और यहाँ बीट्स घटी हैं। अच्छा मतलब 216 अगर हम 3 मतलब कम करते हैं तो वो 256 हो जाता है, पर अगर इसमें 3 ऐड करते हैं तो ये बढ़ जाता है। हाँ। तो मतलब 260 हर्ट्ज सही है। तो ये डिफरेंस 3 का आ गया ना Yes, लोडिंग के बाद। Yes, अगर हम इसको सही मान के चलते हैं लोडिंग में फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। Yes. अब ये अगर मान लो हो गया, थोड़ी सी लोडिंग करी, अब इसका इकट्ठा अगर हम साउंड करते हैं तो 3 बीट्स आ सकती है ना, Yes, sir. इसमें तो 5 आएंगी अगर ये सही मान के चलते हैं। Yes, sir. तो लोडिंग के बाद तो बीट फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए अगर 250 सही मान के चलते हैं, ठीक है ना। Yes, sir. तो हमने क्या फिर रिजल्ट क्या निकाला, इफ ऑन लोडिंग बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस देन टेक पॉजिटिव साइन, ना सॉरी टेक नेगेटिव साइन, ये आएगा। सर minus। गिवन होएगा आफ्टर लोडिंग वाला? तो आपकी ऑब्जर्वेशन है, ये 4 नहीं के सर, 3 हो गई, जैसे- गिवन होगा, ये डाटा Before गिवन after होगा given होगा। कि बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ी है कि घटी है लोडिंग के बाद। तो साइन कन्वेंशन क्या आया, केस नंबर 1, इफ ऑन लोडिंग बीट फ्रीक्वेंसी इनमें होगी। decreases take negative sign, या होगा। ठीक है, ये हमने प्रैक्टिकल करके देखा यार, हमने लोडिंग किया। अब यहाँ 2 ऑप्शन आ रही हैं, दोनों 2 ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, Yes, sir. ऑप्शन तो एक ही होगी ना, एक यूनिफॉर्म की एक ही फ्रीक्वेंसी होगी। अब 4 का डिफरेंस तो है, इसका 4 बिट्स मिल रही है, 4 का डिफरेंस होना चाहिए इसका। तो 4 का डिफरेंस अगर ये 256 है तो 4 का डिफरेंस 260 लेके चले तो भी 4 का डिफरेंस है, 252 लेके चले तो भी 4 का डिफरेंस है। तो मतलब जो N2 है वो 252 हर्ट्ज से वो है, फिर मतलब करेगी अगर उसे माइनस करते हैं तो। हाँ जी, सर मतलब अगर केस 1 के हिसाब से चले, हैं? अगर केस 1 के हिसाब से चले, हाँ। अगर माइनस करते हैं हाँ। तो लोडिंग से तो कम ही होगी ना फ्रीक्वेंसी, तो 252 नहीं बनेगी अगर हम केस 1 के हिसाब से चले कि अगर माइनस करते हैं 4। माइनस ने हमने लोडिंग की है, लोडिंग का मतलब फ्रीक्वेंसी घटाई है। हाँ जी। अब कितनी लोडिंग की है तो नहीं पता, मान लो थोड़ी सी लोडिंग हुई है, थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी इसकी कम हो गई है, और फिर इस दोनों को साउंड करो लोडिंग के बाद, तो आपने क्या देखा, ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन में 3 बीट्स आ गई, मतलब बीट्स कम हो गई। Yes, sir. तो 3 इस केस में आएगी कि इस केस में आएगी। अगर इसकी लोडिंग करते हैं तो ये 259 होगी, 3 का डिफरेंस आ गया, 3 फ्रीक्वेंसी 3 बीट्स बन सकती हैं। लेकिन इसको लोड करते हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी 251 रह गई। अब इसको और इसको आप साउंड करेंगे तो 5 बीट्स शुड बी ऑब्जर्व्ड। ओके सर, ठीक है। यहाँ तो 3 बीट्स आई हैं, तो क्या कंक्लूजन निकला, अगर बीट फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है तो आपको यहाँ माइनस साइन लेना है। अगर बढ़ सकते तो प्लस, माइनस लेना प्लस लेना और माइनस में नहीं, प्लस लेना है, क्योंकि ये प्लस करके 260 आया ना, प्लस करके 260 आया, 260 वाला इससे मैच कर रहा है, तो यहाँ टेक पॉजिटिव साइन। ओके सर। यस भैया, आप चेक कर लो इसको, जो मैंने स्टेटमेंट दिया उसको चेक कर लो। यस सर।
ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है कि आफ्टर लोडिंग व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। अगर डिक्रीज होती है तो पॉजिटिव, अगर इंक्रीज होती है तो नेगेटिव। रटना नहीं है, प्रैक्टिकल हमने टेस्ट कर हाँ ली जी है। ओके, ये लोडिंग की केस हो रही है, फाइलिंग नहीं है। फाइलिंग का मतलब होता है इसको रगड़ के इसको हल्का कर दो, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, और उसमें उल्टा हो जाएगा। उसमें उल्टा देखो। उल्टा क्या होगा? मतलब डिक्रीज है तो नेगेटिव साइन लेना और इंक्रीज है तो यस पॉजिटिव साइन यस लेना। यस यस। ओके। 4 केसेस उल्टा तो बने। इसमें हुआ, उसमें तो सीधा हो रहा मतलब ये केस हुआ, बाकी केस कर इसका उल्टा हो जाएगा। इसमें उल्टा हुआ, इसमें इसने उल्टे का उल्टा करना मीन यहाँ पर प्लस साइन लिया है, बीट फ्रिक्शन घटने से यहाँ प्लस साइन लिया है, Yes. और फाइलिंग में अगर बीट फ्रिक्शन घटती है तो माइनस साइन लेना है। 4 केस हो गए टोटल। आप चेक कर सकते हैं, वो केस भी ले लो। आफ्टर फाइलिंग, ठीक है। आफ्टर फाइलिंग, क्योंकि हमें बी के बारे में कंफ्यूजन है कि 260 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी उसकी ली जाए या 250 हर्ट्ज ली जाए। फाइलिंग करने से फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी क्योंकि प्रॉम विल बिकम लिटिल बिट लाइटर, फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज। तो इंक्रीज होके लेटर से थोड़ी सी फाइलिंग किया 261 हो गया, ज्यादा किया 262 हो गया, ये पॉसिबिलिटी होगी ना। और इसकी फाइलिंग करी तो 253 हर्ट्ज हो गया, और ज्यादा फाइलिंग कर दी तो और फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी बढ़ गई। तो आफ्टर फाइलिंग लेट अस सपोज बीट फ्रीक्वेंसी जैसे यहाँ डिक्रीज हुई है, यहाँ भी डिक्रीज हो गई। लेट अस सपोज 3 रह गई। इसके साथ हमने कुछ नहीं किया। ये नॉन फ्रीक्वेंसी है 256 हर्ट्ज, लोडिंग इसकी नहीं करी। लोडिंग और फाइलिंग हमने अननोन फ्रीक्वेंसी वाली ट्यूनिंग फोर्क की करनी है। क्लियर? तो फाइलिंग का मतलब है जैसे पंक्चर लगाते हैं तो सैंड पेपर से रब करते हैं ना, तो उसको हल्का कर देते हैं। ऐसे मेटालिक रबर होता है, आप इसको इसके साथ इसको रब करेंगे तो ये थोड़ा स्लाइट हल्का हो जाएगा। उसके बाद फिर अगर आप इसको साउंड करते हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। अच्छा कोई बात नहीं, ये समझ में आ गया। फाइलिंग की है, आफ्टर फाइलिंग क्या ऑब्जर्वेशन मिली, ये दिया होगा तो फ्रीक्वेंसी बीट फ्रीक्वेंसी कम हुई कि ज्यादा, मानो यहाँ भी कम हो गई लेट अस सपोज। तो अब आप देखो जो नॉन ट्यूनिंग फोर्क थी, नॉन फ्रीक्वेंसी थी, वो 256 थी। ओके 52 वाला सही है। ओके, और जो अननोन फ्रीक्वेंसी N2 है दैट इज N1 प्लस माइनस है। वी आर डिसाइडिंग द साइन, प्लस माइनस में कौन सा साइन लिया जाए। यहाँ तो आपने देख लिया बीट फ्रीक्वेंसी आफ्टर लोडिंग इफ बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस एक पॉजिटिव साइन, ठीक है कि नहीं। यहाँ एक बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस तो फिर क्या होगा, मैचिंग देखो किससे होती है। तो 256 ही रहेगा, 3 का डिफरेंस इधर आता है कि इधर आता है, इधर तो 5 का डिफरेंस हो गया 252 में आ गया, 253 है ना, यहाँ आ गया। यस सर। तो इसका मतलब ये माइनस साइन करके आएंगे। तो टेक यहाँ क्या होगा, मतलब ये हो जाएगा 252 if on filing beat frequency decreases नेगेटिव साइन। then take नेगेटिव साइन। negative sign। चार केस बनते हैं। अभी इसमें भी हमने बोला कि ऑन लोडिंग डिक्रीज हुआ तो टेक पॉजिटिव साइन, अगर यहाँ इंक्रीज होता तो टेक नेगेटिव साइन, वैसे वर्सा, ठीक है ना। फिर तीसरा केस ये बनता ऑन फाइलिंग बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस देन टेक नेगेटिव साइन। तो जो यहाँ N2 आएगा इस केस में 256 माइनस 3, तो तब ये 253 ये 253 ये आएगा। 52 पहले 4 का डिफरेंस था ना, यस तो ये सही है, इसी को हमने फाइलिंग की है। और यही हमने देखना ये करेक्ट है कि ये करेक्ट है। 252 फाइलिंग से हल्का हो गया, ये आ गई। बेसिकली तो ये थी ना जिससे 4 बिट्स मिलती थी, यस फिर इसकी फाइलिंग करके फिर फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ी है और बिट फ्रीक्वेंसी घटी है। ओके, तो अगर आप फाइलिंग करते हैं एंड यू सी व्हाट हैपेंस आफ्टर फाइलिंग, यू हैव टू फाइल यूनिट फोक ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी। लोडिंग एंड फाइलिंग उसी की होगी। यस एंड आफ्टर लोडिंग आफ्टर फाइलिंग यू हैव टू सी के बिट फ्रीक्वेंसी तो क्या हुआ। अच्छा सर, अगर मान लो फाइलिंग के बाद
जो बीट की फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज हो जाती है तो फिर टेक तो पॉजिटिव पॉजिटिव साइड। यस तो उसमें भी अगर सेम ही है उसमें भी मतलब सेम ही करना है यस, उसमें अगर मतलब remaining दो जो फ्रीक्वेंसी है- इंक्रीज कर जाती है तो टेक नेगेटिव साइड। मतलब जो रिमेनिंग दो केस हैं वो इन दोनों के वाइस वर्सा है यस, गॉट माय पॉइंट। Yes, sir. यहाँ आप लिख सकते हैं एंड vice versa। वाइस वर्सा, यहाँ भी आप लिख सकते हैं।